बच्चों आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज मैं लाया हूं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ये वायर हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, ये वायर हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। ये स्टडी करंट फ्लो थ्रू इट, स्टडी करंट फ्लो हो रहा है। करंट I is flowing, let us say current I is flowing through this non-uniform cross section wire. ठीक है, the drift speed of electron at points P and Q is Vp and Vq. Then what happens? Vp will be equal to Vq, Vp less than Vq, Vp greater than Vq और डेटा इनसफिशिएंट बोल रहा है। एक होता है बच्चों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर। ये है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर जिसमें जितना एरिया लेफ्ट साइड पे है इतना ही एरिया राइट साइड पे है। देखिए दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर। ये यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जैसे हम यहाँ से बढ़ेंगे तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इज इंक्रीजिंग। एरिया एट पॉइंट Q is greater than area at point P। ठीक है बच्चों, एरिया एट पॉइंट P। हम अगर अब आगे बढ़ेंगे तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया एट Q। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है बच्चों? वी नो I इज इक्वल टू, हाउ टू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ I। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है हाउ टू रिमेंबर I इज इक्वल टू वीणा, VENA। ठीक है बच्चों, वेयर व्हाट इज V? V इज नथिंग बट ड्रिफ्ट स्पीड, VD। ओके, VD इज नथिंग बट स्पीड। तो इसको VD अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, VD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई ENA हो जाएगा। देन VD इज व्हाट? VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बच्चों, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसी तरह व्हाट एट VP, ओके, VP और VQ हमको कंपेयर करना है। ठीक है, इफ आई मूव फ्रॉम पॉइंट P टू Q व्हाट हैपेंस टू दिस स्पीड? देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एट पॉइंट P एरिया इज लेस कंपेयर टू पॉइंट Q, तो क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इफ आई मूव फ्रॉम पॉइंट P टू Q व्हाट हैपन? द ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। ओके, एरिया अगर कम है तो क्या हो जाएगा? एरिया अगर कम है तो ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर एरिया अगर ज़्यादा है, एरिया अगर ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देयरफॉर ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस, देयरफॉर व्हाट हैपेंस? VP इज greater than VQ. This is the right answer. एरिया अगर कम है तो ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा है, एरिया अगर ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट स्पीड कम है। Therefore VP is greater than VQ is the right answer. The drift speed decreases if I move from point P to Q. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन ए वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद रेडियस R, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल विद ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी V when a current I flows through the wire. The current in another wire of half the radius and of the same material when the drift velocity is 2V. 2I हो जाएगा I/2 I/4। हाँ, ये कह रहा है what is the equation for current? I is equal to वीणा, VENA। ठीक है बच्चों, फिर V इज व्हाट? VD, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ रेडियस R, हाँ, व्हाट इज I इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस A इज इक्वल टू πr²। वी नो A इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू πr²। यहाँ पे मटेरियल तो सेम है। ठीक है बच्चों, सेम मटेरियल है, देयरफॉर N विल बी सेम। ठीक है, और E is same here, only changes in VD and EA. VD, how much is the drift velocity in the first case? It is V, VEN. What is the radius? Radius is R, that is pi r square. ठीक है, in the first case.
सेकेंड केस में क्या हो रहा है, आई डैश इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 2v, ठीक है, 2v इंटू ई इंटू एन इज एज इट इज, ओके। अब यहाँ पे रेडियस द करंट इन अनदर वायर ऑफ हाफ द रेडियस, रेडियस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, देयरफॉर कितना हो जाएगा ये, पाई इंटू आर बाई टू दी होल स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। जिस 1 2 आर 2, 2 2 आर 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों, वी ई एन पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, दैट इज सेम एज, दिस इज सेम एज आई बाई 2, therefore I dash is equal to कितना हो जाएगा, I by 2 is the right answer, C is the right answer। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये कह रहा है the potential difference V is applied across a copper wire of diameter D and length L, ठीक है, when only D is double the drift velocity हमको इक्वेशन पता है, the equation for drift velocity is VD is equal to EE tau by m है। what is E is equal to, I can write V by L, ठीक है, V by L, ठीक है, ये diameter पे डिपेंड नहीं कर रहा है, it does not depend on the diameter, it is same, okay, VD is equal to same as VD dash, even if you double, when diameter is double there is no change in the drift velocity, VD is equal to V dash, it remains same, becomes 2 times, becomes half, does not change, this is the right answer। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है when a potential difference is applied across the ends of a linear metallic conductor, अच्छा ठीक है, लीनियर एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये प्लस ये माइनस वी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल्स, बिकॉज करंट फ्लोज लाइक दिस, करंट आई फ्लोज लाइक दिस। अब क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड नहीं होंगे, दिस इज रॉन्ग आंसर। ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड वर्ड ठीक नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर ए कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ, जब when you apply potential difference across the ends of a linear metallic conductor, this is higher potential, this is lower potential, current flows from where, higher potential to lower potential, electrons flow from lower potential to higher potential, opposite of current, ठीक है, और ये constant drift velocity से चलते हैं, इसका constant drift velocity जो है ये constant होती है, this is constant, so this is the right answer। group of electrons acquire a constant drift velocity from the lower potential end to the higher potential end, this is the right answer। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 into 10 to the power of 18 Ne plus ions, ठीक है, move to the right each second, okay, while 1.2 into 10 to the power of 18 electrons move to the left per second, electron charge is, ठीक है, E दिया गया है, the current in the discharge tube, ठीक है बच्चों, ये एक नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब लीजिए, ठीक है, इसमें पॉजिट्रॉन्स होते हैं, इस आयन्स वो मूव हो रहे हैं राइट साइड की तरफ, ठीक है बच्चों, वो मूव हो रहे हैं राइट साइड की तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब करंट फ्लो होगा इस तरफ, ओके, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन्स, ठीक है। वी नो दैट I is equal to what, I is equal to charge flown per unit time, that is nothing but Q is equal to Ne by T, ठीक है, हाँ,
Now let us find the current because of the electrons. I E minus is equal to N E by T. I E minus, I can write this as this is the current due to the flow of electrons, that is on the left side. Okay, I E minus is equal to N E by T. ठीक है बच्चों, ये बिकॉज ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे मैं E माइनस लिख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो. E माइनस, ठीक है. नाउ व्हाट इज द करंट बिकॉज ऑफ द पॉजिट्रॉन्स. I E plus is equal to N E plus by T. ठीक है बच्चों. हाँ, नाउ this current is due to the electrons and this current is due to the positrons. Okay, ठीक है. ये दिया कितना गया है, I E minus is equal to N E minus by T. यहाँ पे दिया गया है कितना है वो 2.9 इलेक्ट्रॉन. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1.2 है. कितना है बच्चों, ये 1.2 है. 1.2 into 10 to the power of 18 into E we know how much, 1.6 into 10 to the power of 9 minus 19 divided by per second. This is each second is 1. ठीक है, you will get one value. That value is how much, 1.2 into 1.6. If you multiply 1.2 and 1.6, you will get that as approximately 1.92. 1.92 into 10 to the power of minus 1. 18 minus 19 is 1. ठीक है, amperes of current. ठीक है बच्चों. One 1.2 into 10 to the power of 18 into 1.6 minus 19 is 1.92. Now let us find the current because of the positrons. Ne plus by T. ये कितना दिया गया है, neon discharge tube ions, Ne plus ions. Okay, that is 2.9 into 10 to the power of 18 into E we know charge. Okay, electron charge is how much, 1.6 into 10 to the power of minus 19, that is per second by 1. That is equal to 2.9 into 1.6. 2.9 into 1.6 you'll get how much, 4.64. ठीक है बच्चों, 4.64 into 10 to the power of minus 1 amperes. ठीक है बच्चों. Now what is the total current? I is equal to IE minus plus IE plus, and always current flows in the direction opposite to the flow of electrons and in the direction of the positrons, that is towards right. That is towards right. Towards right. Okay. इन दोनों को ऐड करना है. 1.92 into 10 to the power of minus 1 plus 4.64 into 10 to the power of minus 1. That is equal to how much is 1.92 plus 4.64, that is equal to 6.56. 6.56 into 10 to the power of minus 1, that is nothing but approximately 0.66. 0.66 amperes, that is towards right. Towards right. ये towards right होगा बच्चों. .66 towards right. This is the right answer. Hope you understood. A multiplication बहुत आसान है. Okay, you can multiply very easily and you can add up the values. Next question की तरफ पढ़ते हैं. एक क्वेश्चन कह रहा है there are 8.4 into 10 to the power of 22 free electrons per centimeter cube in copper. ठीक है, the current in the wire is, current दिया गया है, charge on the electron, then the drift velocity, then the
drift velocity, then the drift velocity of electrons in a copper wire of 1 mm square cross section will be. ठीक है बच्चों, यहाँ पे n is given, यहाँ पे n is given, that is 8.4 into 10 to the power of 22 per centimeter cube, पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पर n दिया गया है 8.4 इंटू 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको हम अगर मीटर्स क्यूब पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 8.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28 पर मीटर क्यूब हो जाएगा. और यहाँ पे करंट इज गिवन I इज इक्वल टू 0.21 एम्पेयर्स, E is given, E is equal to 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम. ठीक है, the drift velocity. We know I. What is I is equal to? पता है, वीणा, VENA. ठीक है बच्चों, हाँ, where V is drift speed or drift velocity, that is VD is equal to I divided by ENA. I कितना है बच्चों? I दिया गया है 0.21 डिवाइडेड बाई E is 1.6 into 10 to the power of -19. N कितना है? N है 8.4 into 10 to the power of 28 into area. Area is हाँ copper wire. हाँ, यहाँ पे the drift velocity electrons in a copper wire of 1 mm square cross section, that is A is equal to 1 mm square दिया गया है. इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में. 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -6 हो जाएगा. ठीक है, नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन, VD इज इक्वल टू 0.21, ठीक है, डिवाइड बाई, बच्चों आपको मैं पिछले वीडियो से बोला हूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कैन बी रिटन एज, दैट इज 1 बाई E. 1 बाई E इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट दैट एज 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18. ठीक है बच्चों, यहाँ पे इंटू 6.25, ये जो है 1 डिवाइड बाई 1.6 -19 कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 हो जाएगा. अब बचा यहाँ पे 8.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 -6 -25 हो जाएगा. ठीक है, -25, इट इज -3. ठीक है बच्चों, VD इज इक्वल टू 0.21 इंटू 6.25, 6.25 into 0.21, you will get as 1.3125 into 10 to the power of 18 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाने से यहाँ, दैट इज यहाँ पे 0.21 divided by 1.6 into -19. N is 8.4 into 28 into 10 to the -6. Area is 10 to the power of -6 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, so 1 by 1.6 10 to the -19 is 6.25 into 10 to the 18 हो जाएगा. This is right. 8.4 as it is into 10 to the power of -19 -6 and plus 28 is, that is 28 -25 plus 3. ठीक है, ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे if you simplify this one, you will get this as 18 -3. ठीक है बच्चों, divided by 8.4.
1.3125 divided by 8.4. VD is equal to, okay, VD you will get as 1.56 into 10 to the power of, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया है, -5 मीटर्स पर सेकेंड आएगा, ठीक है बच्चों। दिस इज now here यहाँ पे now let us simplify 0.21 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इंटू 8.4 इंटू 10 to the power of 28 minus 25 is 3, ठीक है बच्चों। हाँ, VD is equal to 0.21 divided by 1.6 into 8.4, that is equal to 13.44 into 10 to the 3. VD is equal to, if you divide 0.21 divided by 13.44, you are getting this as 0.0156 into 10 to the minus 3 हो जाएगा, that is VD is equal to, let us see the answers. If I see the answer, this is 1.56, this can be written as 1.56 into 10 to the power of minus 5 meter per second. This is the right answer. Okay. The same problem, if you want to simplify 0.21, okay, this can be done by method 2. We know that 1 by E is equal to, that is 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19 can be written as 6.25 into 10 to the power of 18, ठीक है बच्चों। This can be simplified as VD is equal to 0.21 into 6.25 into 10 to the power of 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये तो चला गया, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑफ दिस वन 8.4 into 10 to the power of 28 minus 6, 28 minus 6, that is 22, 10 to the power of 22 हो जाएगा बच्चों। VD is equal to 0.21 into 6.25, that is equal to 1.3125 divided by 8.4 into 10 to the power of 18 minus 22, that is equal to minus 4, ठीक है बच्चों। VD is equal to 1.3125 divided by 8.4, that is again 0.15625 into 10 to the power of minus 4, that is same as VD is equal to 1.56 into 10 to the power of minus 5 meter per second।
आंसर वही आएगा. ठीक है. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. दिस इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assume that each atom of copper contributes one free electron. ठीक है. If the current flowing through a copper wire of 1 mm diameter is 1.1 amperes. ठीक है बच्चों. The drift velocity of electron will be how much? Okay. यहाँ पे one free electron F is equal to 1 है. ठीक है. Diameter is how much? Diameter is 1 mm. 1 m diameter is 1 mm. So convert this into meters. Minus 3 meter. Current is 1.1 ampere. Drift velocity, then density is given. Density is given, that is rho is given 9 gram per centimeter cube. Convert this into kg per meter cube. I can convert this as kg per meter cube as 9 into 10 to the power of 3 kg per meter cube. Atomic weight is given. Atomic weight M is equal to of copper, that is 63. Atomic weight of copper is 63 is given. ठीक है बच्चों. 63 grams, that is 63 grams. That is converted into kgs into 10 to the power minus 3 kg. ठीक है बच्चों. और how to find the area? Area is A is equal to pi r square. That is pi into 1 by 4. Pi into 1 by 4, because what is diameter? Diameter is equal to radius by 2. 1 by 4 into 10 to the power of minus 6 meter square area. ठीक है बच्चों. Now how much is VD? VD is equal to how much? बच्चों जब भी if you have been given density, atomic weight, okay, and number of free electrons, okay, you have to use the formula VD is equal to M into I divided by rho Na, it is Avogadro number, into F A E. ठीक है बच्चों. Now we'll substitute all the values here. How much is mass? Mass is 63 into 10 to the power of minus 3. Current, how much is current? Current is given as 1.1 divided by 1.1 divided by how much is rho? That is 9 into 10 to the power of 3. Avogadro number we know, 6 into 10 to the power of 23. F, number of free electrons 1. Area is into pi by 4. Pi by 4, I can write this as 0.25. 1 by 4 is 0.25. Pi into 10 to the power of minus 6 into E is how much? 1.6 into 10 to the power of minus 19. Now you have to simplify this one. If you simplify this one 7 times, okay, this gets cancelled. Okay, 7 into 1.1 divided by this, you can write as 6.25 into 10 to the power of 18. ये चला गया. ठीक है. This you can 1 by 1.6 minus 19 is 6.25
डिवाइड बाई अब बचा 6 इंटू 0.25 6 into 0.25 is, you can write this as 1.5 pi 1.5 pi into 10 to the power of 3 plus 23 is 26. 26 minus 6 is 20. That is equal to 7 into 1.1, that is approximately 7.7 into 6.25, that is equal to 48.125, 48.125 into 10 to the power of 18 minus 20 is minus 2, I can write, divided by 1.5 pi, that is equal to 48.125 divided by 1.5 into pi is approximately 4.8 ही आएगा बच्चों, into 10 to the power of minus 2 into 10 to the power of minus 2. Okay, this I can write as 48 by 4.8, that is 10. 48 by 4.8, you can write this as 10 into 10 to the power of minus 2. आंसर देखिए कितना आ रहा है, आंसर will be 0.11, that is equal to 0.11 millimeter, 0.11 millimeter per second is the right answer. It is interval. बच्चों इसमें दो बातों का ख्याल रखना है. This formula you have to remember and be careful in the calculation. You can write this as 1 by e. 1 by e is equal to how much? That is 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19, can be written as 6.25 into 10 to the power of 18. Okay, and be careful, cancel this one. Okay, and then you start multiplying and dividing, look at the answer. बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ. I hope you enjoyed this video. Try to learn the problems, practice it. I wish you all the best for your examinations. Thank you one and all.